So let's move on to the next part of alkaline earth metals. Last session, we have discussed about the introduction to the alkaline earth metals periodic properties. Now we move on to the next part, which relates with the general characteristics. And the flow is similar to what we have already discussed in the alkali metals. So more or less, जो points हमने वहाँ discuss किए थे, they are similar. So now, coming to the oxides and hydroxides. So here also the alkaline earth metals represented by M burn in oxygen to form the oxides of the type MO. Now remember, here the alkaline earth metals can form oxides, peroxides, but they can't form superoxides. Superoxides formation is not possible for alkaline earth metals, whereas peroxides can be formed by the heavy metals like calcium, strontium, barium. So if I were to write the peroxide formula, then the peroxide is represented as M plus 2 with O2 minus 2. So the formula of the peroxide of this family would be MO2. Remember, पोटेशियम का जो सुपर ऑक्साइड था उसका फॉर्मूला KO2 का था. उस केस में K was having a +1 charge. But when we have barium का peroxide, it would be represented as BaO2. The formula similar है, but obviously there is a difference in the oxidation state and the charges. So remember that difference. So metals of the alkaline earth metal family combines with oxygen to form oxide and the peroxide. Peroxide is a characteristic reaction for the heavier elements. Next, reactivity. Down the group, the reactivity goes on increasing, increasing or decreasing. Loudly, please. increasing, Increasing. Because जैसे जैसे metallic character बढ़ेगा, the reactivity would go on increasing. So here beryllium का oxygen के साथ the direct combination would be very difficult and it will be a very slow reaction. Next, जो oxides बनते हैं of the type MO except beryllium का oxide, except the beryllium का oxide have a rock salt structure. रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का मतलब दे हैव अ स्ट्रक्चर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू NaCl, आइडेंटिकल टू NaCl. अब ये NaCl का जो लेटाइज स्ट्रक्चर है, इफ वी ऑब्जर्व सॉलिड स्टेट में और डिटेल में पढ़ेंगे, इन दैट लेटाइज स्ट्रक्चर Na plus ion is surrounded by 6 Cl minus and each Cl minus is surrounded by 6 Na plus. मतलब पूरे लेटाइस में जो क्यूबिक अरेंजमेंट रहता है उसमें Na plus and the Cl minus are surrounded by 6 opposite ions, and that gives an important parameter for the ionic compounds which is called coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कटायन कितने अनायन से सराउंडेड हैं एंड वाइस वर्सा. तो इस केस में फॉर बोथ द आयंस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. So many a times they ask that for the calcium or magnesium oxide, what is the coordination number? The answer will be 6 because it has a structure similar to NaCl. Now observe करो, मैंने लिखा है कि सारे ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर NaCl के जैसा है except बेरिलियम ऑक्साइड. The reason for beryllium oxide not having the rock salt structure is this oxide is not ionic. It is a covalent compound. And covalent compound ka reason can be related with the Pajan's rule. So beryllium ke or lithium ke, most of the compounds have the higher covalent character. And as we move down the group, the ionic character increases. Fine. BeO is covalent. Other oxides are ionic and they have a structure similar to rock salt or NaCl. Then beryllium का जो oxide है, that is found to be amphoteric. The oxide and hydroxide is found to be amphoteric. Now this is very important because पूरे S block के family में only beryllium is amphoteric. Even lithium was basic in nature, but beryllium in the entire S block
हैज द एम्फोटेरिक नेचर। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ही ऑक्साइड पूरे एस ब्लॉक में एम्फोटेरिक है, एंड दैट्स बेरिलियम। The reason is the hydroxide of beryllium have a tendency to react with the base as well as acid. So the reactions which we have for this particular hydroxide is, with the alkali it forms a berylate ion having a formula Na2BeOH4, जहां पर आप देख सकते हो बेरिलियम का नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बना रहा है वो 4 है, एंड द कोवेलेंस इज इक्वल टू 4, and in the acidic medium it forms a complex of the formula BeH2O4 with a Cl2। यहाँ पर भी देखोगे तो beryllium is bonded with 4 water molecules and the covalence if asked would be equal to 4, and remember this covalence of beryllium is its max covalence because इसके ऊपर वो expand नहीं कर सकता, as the second period element have the absence of Vacant d orbitals. वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 से ज्यादा बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। एम आई क्लियर ऑन दैट? Yes, sir. ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड्स, व्हेन वी हैड टॉक्ड अबाउट अल्कली मेटल्स, हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था, थर्मल स्टेबिलिटी, देन द सल्यूबिलिटी and the basic character. The trend is similar to the alkali metals. Can you answer this? Stability. Quick. Stability. Decreases. नहीं. Lithium के salts are thermally less stable. That is why they were able to decompose because of the covalent nature. Down the group ionic nature बढ़ता है, इसीलिए सारे salts जो होते हैं वो thermally ज़्यादा stable हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी का ट्रेंड हर सॉल्ट्स के लिए कैसा था? Increases down the group. Increases down the group due to increase in the ionic character. Just remember the reason related with that. When I talk about stability, you think about the ionic character. You get the trend. Solubility of hydroxides. Decrease down the group. It should have been. There Oh, is an sorry. Yeah, exception it increases down the group. because the statement is solubility of all the compounds except, Fluorides and hydroxides. perfect, decreases down the group. Hydroxides and fluorides में increase होता है, and what is the reason? What are the two parameters for solubility? Hydration enthalpy and lattice enthalpy. So when I say solubility down the group decrease हो रहा है, तो which is a dominating factor? Solubility down the group decrease जब होता है, which is the dominating factor? Hydration. हाँ, Lattice. नहीं बच्चा, डाउन द ग्रुप जो डिक्रीज होने का टेंडेंसी है, that is due to the hydration of the smaller cations ना, which is larger. तो जब हम बोलते हैं कि solubility डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, the hydration enthalpy is the dominating factor. वहां हम बोलते हैं the decrease in the hydration enthalpy is more than the decrease in the lattice enthalpy. लेकिन हाइड्रोक्साइड्स और फ्लोराइड्स में ट्रेंड रिवर्स हो जाता है because the lattice enthalpy dominates the hydration enthalpy. We say that the decrease in the lattice enthalpy is more than the decrease in the hydration enthalpy. See, फंडा बहुत सिंपल है।
हाइड्रेशन एंथैल्पी और लेटाइस एंथैल्पी दोनों ही डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? Decrease. डिक्रीज हो रहा है। जब हाइड्रेशन का डिक्रीज बहुत ज्यादा हो जाता है लेटाइस के कंपैरिजन में, तब सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। लेकिन जब लेटाइस का डिक्रीज बहुत ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है। एंड वो सिचुएशन आता है फ्लोराइड्स और हाइड्रोक्साइड्स में। सो द कंक्लूजन इज solubility of hydroxides and fluorides increases down the group due to, say, due to Greater decrease in hydration enthalpy than lattice enthalpy. उल्टा। रिमेंबर, ऊपर से नीचे जब डिक्रीज हो रहा है ना तो हाइड्रेशन को रिलेट करना है, और ऊपर से नीचे जब इंक्रीज हो रहा है तो लेटाइस को रिलेट करोगे ना गौतम। सी if I talk That's very about confusing. see if I talk about lithium sulfate and cesium sulfate, theoretically which should be more soluble? सिंपल, सल्यूबिलिटी मतलब हाइड्रेशन लेटाइस को डोमिनेट करना चाहिए। कहां पर हाइड्रेशन डोमिनेट करता है? Li Li। मतलब डाउन द ग्रुप सल्यूबिलिटी इन जनरल हमेशा कैसा होना चाहिए? should decrease. परफेक्ट। एंड द रीजन इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ व्हाट? Hydration enthalpy. So can I say solubility when decreases down the group, it is due to decrease in He more than the decrease in Le? Yes, sir. Fine. But you know that there is an exception for hydroxides and fluorides. अभी exception का reason क्या होगा? Just reverse the statement. In that case, the decrease in the Le would be more than the decrease in the He. नहीं समझा अभी भी? Yes, sir. Now I got it. सिंपल है, देखो इसको मगअप भी नहीं करना है, समझ के थोड़ा रिलेट करोगे तो इट्स वेरी सिंपल। पॉइंट वन, solubility is a property dependent on two thermodynamic factors, lattice enthalpy and hydration. In general, for a compound to be more soluble, the hydration should be greater than the lattice enthalpy. Okay. Yes, sir. Generally the hydration is more for the smaller species. That's why lithium wala salts generally should be more soluble than the other salts of the same group. Yes, sir. And that is the case for normally all the salts with the exception of hydroxides and fluorides. तो अब यहाँ पर जब हम बोलते हैं once again solubility increases for hydroxides, it is due to decrease in, complete the statement now, Lattice enthalpy. decrease in lattice enthalpy more than the decrease in, Hydration enthalpy. perfect, works good, Yes, sir. remembered. Okay, next, basic character. Which is a stronger base, ऊपर वाला या नीचे वाला? Basic character is to be related कि when the hydroxide is dissolved in water, it should give more concentration of the OH negative ions. कौन देगा? BeOH twice या बेरियम हाइड्रोक्साइड? अच्छा बताओ, पानी में कौन डिसॉल्व करेगा? बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड या बेरियम का हाइड्रोक्साइड? Barium. तो अगर वो ज्यादा डिसॉल्व करेगा तो ज्यादा टूटेगा, ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा OH नेगेटिव देगा। Yes, sir. समझा? सी, बेरियम हाइड्रोक्साइड थर्मली स्टेबल है, थर्मली स्टेबल है बिकॉज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। लेकिन जैसे ही पानी में डालोगे तो आयोनिक कंपाउंड्स टूटते हैं कि नहीं आयंस देने के लिए? Yes, sir. समझा? तो बेसिक कैरेक्टर हमेशा डाउन द ग्रुप क्या होगा? Increase. इंक्रीज। So you can see the point over there, the stability, solubility and basic character of hydroxides of the alkaline earth metals increases. And I have talked about the reasons for all of them.
Stability could also be related with the enthalpies of formation. तो जितना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी कंपाउंड का ज्यादा होगा, it means that that compound will be thermally more stable या less stable? More stable. More stable. समझा? तो stability in a way is related to enthalpy of formation, also related with the ionic character. Solubility is related with lattice versus hydration enthalpy. Basic character is related to its breakdown in the polar solvent, that is water. Fine. अब कोई डाउट है इसमें? No, sir. Okay. Then alkali metal versus alkaline earth metals, which are more basic? So how do you think about this? Basic character is a property of metals. Alkali metals are more basic. Because alkali metals are more metallic. और more metallic के साथ साथ they have a tendency to lose electron easily to form the cations. ठीक है? तो जिसका metallic character ज़्यादा, वो ज़्यादा basic होता है. In fact, the basic strength across a period from left to right decreases. है ना? Alkali metals are the strongest bases in a period. Do you all agree? Yes, sir. ये तो पता था ना, तो ट्रेंड सिंपल पूछा मैंने, अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन ज्यादा बेसिक होगा? इट्स ऑब्वियसली अल्कली मेटल्स. ठीक है? नाउ इन द नोट्स and also in the NCRT, this particular reaction which you can see in the point number G is given as BOH4Cl2. वो OH4 नहीं है, it should be H2O4. ये NCRT में भी करेक्शन है. Please make a correction in point G, the second reaction, because if you look at this particular complex, B will have a +2 charge and the Cl2 का -2 overall will balance off. और यहाँ पर Na का total +2 would be balanced with -2 of the overall square bracket complex. And you can name this particular salt, it is called sodium berylate. And इसको तो simply hydrated beryllium chloride बोल सकते हैं. ये नाम इंपॉर्टेंट है, बेरीलेट. जैसे अल्यूमिनियम का अल्यूमिनेट, बेरिलियम का बेरीलेट. So whatever points were given over there, I have just made a summary of the things to be remembered. And this is how you can make your notes for the given topic. ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड का टॉपिक आपने थॉरली रीड कर दिया. रीड करने के बाद whatever important points you feel you should note down, वो आप अपने नोट्स में लिख के रखो, ताकि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आए, you should be in a position to answer that. Clear? Yes, sir. Next, coming to the halides. Here also the metals combine with the halogens to form the halides of the formula m plus 2 x minus 1, that is mx2. For halides, the enthalpy of formation is negative, matlab they are all exothermic reactions. And the trend for the enthalpies of formation for the halides is similar to what we have discussed for alkali metals. एक बार वापस बता देता हूँ and answer the question what I asked. The enthalpy of formation of fluorides down the group becomes less negative or more negative? Less negative. Becomes less negative. मतलब जो लिथियम का फ्लोराइड था उसके लिए द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाज हाईएस्ट. इसका मतलब LiF इज वेरी मच स्टेबल. और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना कम सल्यूबल होगा. मैंने ये बताया था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सल्यूबिलिटी से इनवर्सली रिलेटेड है.
But the trend is reversed when it comes to chlorides, bromides and iodides. Correct? Yes, sir. इसीलिए फ्लोराइड्स का सल्यूबिलिटी का एक्सेप्शन है. क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड फॉलोज द रेगुलर ट्रेंड. बराबर? Yes, sir. Okay. Here also, when we talk about beryllium ka halide, let's say beryllium chloride, this would be found to be covalent and the other halides would be ionic as per again Fajans rule. Now beryllium chloride जो है उसके तीन structures exist करते हैं. In the solid state, it exists as a polymeric chain-like structure. Exists as a polymer. When it comes to gaseous phase bonds weak हो जाएंगे, molecules दूर हो जाएंगे, polymer compress हो जाएगा into a dimer. And if the temperature of the order 1200 or above that, then it exists as a monomer. तो बन गए तीन questions. Beryllium chloride in the solid state exists as a polymer, gaseous phase dimer and about 1200 Kelvin monomer. और याद रखना सिंपल है, सॉलिड स्टेट में द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड, तो बिकॉज ऑफ दैट अ लॉन्ग चेन कुड बी फॉर्म्ड. टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉन्ड्स टूटेंगे एंड पॉलीमर विल चेंज टू अ डाइमर इन द गैसियस फेज. और टेम्परेचर बढ़ाओ, बॉन्ड्स और टूटेंगे एंड द डाइमर विल चेंज टू अ मोनोमर. दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर. याद हो गया इतना? Yes, sir. अब इसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड डिटेल्स. So when we draw the structure of polymer BeCl2, एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि बेरिलियम के साथ तो दो ही बॉन्ड्स हैं and it has 4 electrons in the valence shell. So how it can form a polymer? So what is the factor जिसकी वजह से यहाँ पर polymer formation is possible? And we have discussed about this. By looking at the structure, you can answer. Bridge Lone bond. pairs of Cl. Perfect. And where we have seen this similar type structure? AlCl3. Perfect. And what is the relation between beryllium aluminum? Diagonal. Diagonal Diagonal relation. relationship. हो गया याद. जैसे AlCl3 इस तरह से बॉन्ड करता था, वैसे ही BeCl2 भी करता है. इसीलिए तो Al and B have a resemblance. ठीक है. So the lone pair of the chlorine would be donated to the beryllium and will form coordinate bond. The lone pair from this chlorine would be donated to this beryllium. सिमिलरली और एक बेरिलियम जब आएगा तो उसका जो क्लोरीन है वो इसको डोनेट करेगा, इसका दूसरे का क्लोरीन इसको डोनेट करेगा एंड द चेन विल कंटिन्यू. दैट इज द पॉलीमर ऑफ BeCl2 सॉलिड स्टेट में. ठीक है. And what type of bond is formed between chlorine and beryllium? Is it 2 center 2 electron or 3 center 2 electron? Is it a normal bond or a special bond? Yes. थ्री सेंटर Normal. 3. हाँ. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, जहां पर इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेगा एंड द टाइप ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड हियर वुड बी अ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ओनली. B2H6 में जहां पर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा ना, उस केस में इट कांट फॉर्म अ 2C2E बॉन्ड. And this is what happens in beryllium hydride BeH2 that also exists as a polymer in the solid state. And the structure is quite similar to the beryllium chloride. लेकिन जो बॉन्डिंग का प्रोसेस है वो डिफर करेगा. एंड नाउ यू नो द रीजन. The reason is hydrogen doesn't have a lone pair which can be donated to the beryllium. So what happens over here, beryllium, hydrogen and beryllium ka orbitals overlap and they overlap with only 2 electrons available.
And this type of bond which is formed over here would be a special bond which is 3C2E and also called as a banana bond, and this is what happens in B2H6. Am I clear? समझ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So here what happens is beryllium का half filled orbital, hydrogen का half filled orbital, and इस beryllium का Empty. vacant empty orbital shares the 2 electron and forms a 3C2E bond or a banana bond. Now this is not given in the notes. You can note down in the hydrides wala section on page 37. Hydride section on page 37. So I can show a dotted line indicating a banana bond over here. Please make a note of this on page 37 in the hydride section where beryllium hydride related stuff is given. Quickly note down this. Fine? Okay. Come back to 39 page. Halides part में. So next, polymer के structure के बाद dimer structure is also similar, but here there are only 2 beryllium atoms and the chloro forms a bridge between the 2 beryllium and the 2 chlorines lie on the horizontal plane. This is how the polymer would be changed to a dimer. And जब 1200 केल्विन या उससे ऊपर हीट किया जाएगा, it will just exist as a monomer BeCl2. अब इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? What is the hybridization of beryllium in the polymeric state? Apply Vesper, you get the answer. sp3. sp3. Clearly वो 4 bonds बना रहा है. For dimer, sp2. because it is forming 1, 2 and 3 bonds. And for the monomer, sp. sp. Look at the variation. In the polymer, the beryllium is sp3 hybridized. In the dimer, it is sp2. And in the monomer, it is sp hybridized. समझा? Yes, sir. ठीक है, तो ये वाले 2 structures भी वहां पर नहीं दिए हैं. You can make a note of this. See, what I have done is I have just replicated the NCERT. Now apart from whatever is given in NCERT, उसके related चीजें जो है that I am discussing over here, and you should add on in the notes as well, so that while you study, the questions related with that particular topic in and out would be understood. Okay, then comes the next point. When we talk about the chlorides of the alkaline earth metals, they are hydrated because they have the tendency to absorb the moisture. अब सबसे ज़्यादा hydration ऊपर की तरफ होगा. Hence, if you see, the magnesium chloride exists with 8H2O, but the barium chloride on the other side exists as 2H2O. So this clearly gives you the idea that the hydration tendency down the group is decreasing due to the increase in the size of the cation. Next, the chlorides which are hydrated for beryllium and magnesium, when heated, undergoes hydrolysis. But जो बाकी halides है उसको हीट करने पर
सीधा सीधा वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है, मतलब यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। अच्छा, अभी इसका रीजन सोचोगे तो सिंपल है। जो ऊपर वाले हेलाइड्स है वो कोवेलेंट होते हैं, तो उनका डीकम्पोजिशन या ब्रेकडाउन इज पॉसिबल, सो द वाटर कैन lysis मतलब ब्रेक द क्लोराइड एंड फॉर्म द बेस एंड द एसिड। बट बाकी क्लोराइड्स में बिकॉज ऑफ हाई आयोनिक कैरेक्टर दे आर थर्मली मोर स्टेबल, तो उस केस में वाटर उनको तोड़ नहीं सकता है, उस केस में सीधा सीधा वाटर निकल जाएगा। तो फॉर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिमेंबर द हाइड्रोलिसिस हैपेंस व्हेन हीटेड। समझ में आ गया? सी विथ रीजन इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। So now can you tell me after the breakdown of the chloride what are the products? It's a salt and water से breakdown हो रहा है। Magnesium hydroxide and HCl. Magnesium hydroxide and HCl. If I talk about the strength, MgOH twice is a weak or a strong base? weak, Alkaline earth metals are weak bases, and this is definitely a strong acid. मतलब solution में there will be more of which ions? H plus. So solution becomes Acidic. with the pH value Greater than 7. less than 7. Less than 7, sorry. ठीक है। अब वही चीज जब बेरियम या कैल्शियम सॉरी स्ट्रोंशियम के क्लोराइड्स को करोगे तो वाटर सीधा सीधा सुमड़ी में निकल जाएगा, इट विल वेपराइज एंड द क्लोराइड वुड नॉट डिकम्पोज because of high thermal stability. So that's the point given in point number D. Reaction नहीं दिया है, मैंने just reaction के साथ आपको बताया, so it is easier to understand that point. Clear है? ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बेरिलियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड, हाइड्रेटेड क्लोराइड टू बी स्पेसिफिक, ऑन हीटिंग अंडरगो हाइड्रोलिसिस और डिहाइड्रेशन। For beryllium magnesium, it will be hydrolysis. For the other chlorides, it will undergo dehydration. And reason I have explained. And last point में they have talked about fluorides का solubility. Now ये alkali metals में already कर चुके थे हम कि for fluoride, chloride, bromide and iodide, the solubility goes on metal को same रखे तो solubility are you all having confusion again? है तो बताओ, I'll explain you once again. Hello. Yes, sir. See, when we talked about enthalpy of formation, halides के part का specific topic बता रहा हूँ मैं, enthalpy of formation. It is written that the enthalpy of formation for fluorides of alkali metals becomes less negative. I will say decrease. And for the other halides, it was increasing. Reverse is true for chlorides, bromides, iodide. ये point लिखा हुआ है कि नहीं बोलो? Hello. Yes, sir. So when I talk about the fluorides of, let's say, lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium, इस point का मतलब क्या है? When I say the enthalpy of formation for the fluorides is decreasing, it means lithium का fluoride has the highest enthalpy of formation, and more the enthalpy of formation, more is the Stability. stability. अगर उसका stability ज्यादा है तो उसका breakdown difficult है कि easy है? Difficult. अगर वो difficult है तो पानी में जाके वो dissolve होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं होगा. होगा. तो मैंने क्या बोला कि जितना enthalpy of formation ज्यादा होगा उतना solubility कम होगा.
Yes, sir. Yes or no? So when we talk about the fluorides ka solubility order, LIF would be the Least soluble. Least. लीस्ट सल्यूबल, सल्यूबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी. बट यही चीज अगर आयोडाइड की बात करते हैं तो लिथियम से सीजियम आयोडाइड की तरफ Decreases. Decreases. डिक्रीज होगा. आया समझ में? हाउ टू रीड द स्टेटमेंट? So, but you had asked keeping the metal constant and changing the halide. Then what is the order of हाँ, वो solid? मैंने पहले पूछा था, लेकिन फिर किसी ने आंसर नहीं दिया तो मैंने स्टार्टिंग से वापस बताया. तो तीन तीन पॉइंट्स थे. पहला तो फ्लोराइड्स का था, फिर अदर हैलाइड्स, एंड नाउ कमिंग टू दैट सेम मेटल. तो अगर मेटल को सेम रखूं तो इफ आई हैव फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी फॉर अ गिवन मेटल? Increases. Increases, because for a given metal the enthalpy of formation decreases from fluoride to iodide, so solubility will increase from fluoride to iodide. So either ways LiF की solubility देखोगे तो बहुत कम है. तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट था, the low solubility of LiF is due to high lattice enthalpy, and that high lattice enthalpy in a way is related to high enthalpy of formation. Correct. Yes, sir. And the low solubility of cesium ka iodide is due to the smaller hydration enthalpy of both the ions. cesium और iodide दोनों का hydration enthalpy low है. ये आज के क्वेश्चन में भी था ना? Yes, sir. Yes, sir. So those were the two statements and this is the justification over here. समझ में आया अब? Yes, sir. Try to read again. वापस रीड करो, वापस मैंने क्या कंक्लूजन दिए थे, हाउ डिड आई रिलेट द प्रॉपर्टीज विद द अदर थिंग्स लाइक solubility, stability. Understand that relation with the lattice enthalpy, hydration enthalpy. थोड़ा खिचड़ी है इनिशियल पार्ट में, बट व्हेन यू रीड इट ट्वाइस थ्राइस, at the third instant definitely you will have confidence and a greater understanding of the concepts given. See, जहाँ exceptions है we can't help it, वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे. बट उनको याद रखने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि थियोरेटिकली इसका ट्रेंड क्यों ऐसा आना चाहिए, वो पहले आप अपना स्ट्रेंथन करो कॉन्सेप्ट्स को, एंड देन रिलेट विद द एक्सेप्शंस एंड रिमेंबर इट. अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिमेंबरिंग. फाइन. Yes, sir. आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर नाउ. Please go through the topic again if you have not understood, if you have not followed in the last session. अभी अगर समझा है वापस एक बार उसको गो थ्रू करो, दो तीन बार पढ़ो, उसके बाद डेफिनेटली वो समझ में भी आ जाएगा एंड याद भी रह जाएगा. एंड जो ट्रिक्स मैंने बताया है, द प्रॉपर्टीज विच आई हैव को रिलेटेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशन. वो जो रिलेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Now coming to the next topic, the salt of oxo acids. So here also we have a discussion of carbonates, sulfates and nitrates. The similar discussion we had in alkali metals. So let's understand the points given. Carbonates of alkaline earth metals are insoluble in water. As a trend अगर बात करें तो solubility carbonates की decrease होगी. लेकिन ओवरऑल अल्कली मेटल्स के साथ अगर कंपेयर करें या इन जनरल कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सल्यूबिलिटी की बात करें, they are not very soluble because their lattice enthalpies are so very high that it is dominating over the hydration enthalpy. And ये आप पॉइंट ऐसे याद रख सकते हो कि in case of hardness of water, temporary hardness में, we had converted the bicarbonates into the carbonate which was insoluble and that is why it got precipitated. Remember that? Yes, sir. CaCO3 PPT precipitate हो गया था ना. Yes, sir. तो उससे रिलेट करो एंड रिमेंबर दैट कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर very less soluble, so it is as good as insoluble in water and can be precipitated by addition of sodium or ammonium carbonate solution
to a solution of soluble salt of these metals. So remember, the permanent hardness was removed by using sodium का carbonate. Yes, sir. ठीक है, तो this point is entirely related to the hardness. You can make a note of this. Hardness से relate हो गया. तो जो भी फंडामेंटल रिएक्शंस हमने वहां पर डिस्कस किए थे वो कहीं ना कहीं यहाँ सल्यूबिलिटी के कॉन्सेप्ट से रिलेट हो गए. Then the solubility of carbonates in water decreases as the atomic number of the metal ion increases. That is well known. All the carbonates decompose on heating to give carbon dioxide and oxide. Now remember, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो भी सॉल्ट्स का डिकम्पोजिशन होता है वो सारे के लिए सिमिलर है एंड इट इज सिमिलर टू लिथियम. एक बार फिर से, the decomposition of the salts of AEM is similar for all the members of the group and it is similar to the reaction of lithium salt. ये मैंने इसलिए बोला बिकॉज अल्कली मेटल में लिथियम का डिकम्पोजिशन और बाकी मेंबर्स का डिकम्पोजिशन अलग था कि नहीं? Yes, sir. क्विकली, लिथियम का कार्बोनेट जब हीट करते हैं तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? जल्दी से आंसर करते जाओ. आंसर करोगे तो आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. पता चलेगा ना आता है कि नहीं आता है. बोलो जल्दी. Lithium oxide and carbon dioxide. So the carbonate of lithium decomposes to form lithium oxide and carbon dioxide. What happens to the other carbonates when heated? They Nothing don't happened. decompose. Nothing happens. They are thermally very stable. So what I said कि alkaline earth metal के carbonates of the type MCO3, when you decompose this, the products are similar for all the members and it is similar to lithium. मतलब this also will give MO plus CO2 बिकॉज ये थर्मली ज्यादा स्टेबल नहीं होते अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में. सो ऑल द कार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्साइड. सो इन द ब्रैकेट यू कैन राइट सिमिलर टू Li2CO3. सी याद रखने में सिंपल हो जाएगा. देन बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल बिकॉज स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है. सो and can be kept only in the atmosphere of CO2. The thermal stability increases with the increasing cationic size. All the points have been discussed. Then sulfates. The sulfates of alkaline earth metals are all white solids and stable to heat. So lithium के केस में भी अगर Li2SO4 को हीट करते थे तो what were the products? Lithium oxide, sulfur dioxide. बस. And oxygen. And oxygen. सो इन सल्फेट्स को भी अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे आप हीट करो तो द प्रोडक्ट्स वुड बी सिमिलर टू द लिथियम एंड इट विल बी फॉर ऑल द मेंबर्स. देन solubility वाइज बेरिलियम का सल्फेट एंड मैग्नीशियम का सल्फेट वुड बी readily soluble in water and the solubility decreases from calcium to barium sulfate. The greater hydration enthalpies of beryllium and magnesium overcomes the lattice enthalpy factor and therefore their sulfates are soluble in water. Isn't the statements which are written same? Solubility ज़्यादा होने का मतलब the hydration enthalpy would always dominate the lattice enthalpy. A simple correlation to be remembered. Then nitrates. The nitrates are made by the dissolution of the carbonates in dilute nitric acid. So if you have calcium carbonate and you dissolve in the dilute nitric acid, you will get calcium का nitrate CaNO3 twice. Along with that H2O and CO2 would be liberated. So this is the reaction not given. आपको चाहिए तो लिख लो. The nitrates of the alkaline earth metals are made by the dissolution of the insoluble carbonate into the dilute nitric acid. So the nitric acid have a tendency to break this and convert into the calcium nitrate. Next,
The magnesium nitrate crystallizes with 6 molecules of water, whereas barium nitrate crystallizes as the anhydrous salt. This again shows a decreasing tendency to form hydrates with the increasing size and the decreasing hydration enthalpy. Self-explanatory now. Yes, sir. All of them decompose on heating to give the oxide like lithium nitrate. तो पहले तो बताओ lithium nitrate का क्या होता था? Decomposition. Li2O plus NO2 plus O2. Li2O plus NO2 plus O2 दो गैसेस निकलता था, लेकिन बाकी के नाइट्रेट्स का डिकम्पोजिशन क्या देता था? Nitrite. नाइट्राइट एंड देयर वाज लिबरेशन ऑफ O2. ओनली वन गैस ऑक्सीजन. अब अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इनके नाइट्रेट्स की बात करता हूँ तो सबका रिएक्शन सिमिलर है और लिथियम के जैसा है. ऑक्साइड देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन देगा. खत्म हो गया रिएक्शन. Yes, sir. Then comes anomalous behavior. Quickly tell me the reasons for anomalous behavior of any second period element in general. Anomalous behavior. They don't have a d orbital. Absence of the vacant d orbital. This point would be less relevant when we talk about s block. ये ज्यादा relevant होगा जब p block के second period elements का anomalous behavior आएगा. But still that is a valid point. उसके अलावा what were the reasons? High Small charge to size. mass ratio. What is that also called? Polarized. Charge to mass नहीं है, charge to size है. And that's called, Polarizing power. and that is the reason we say beryllium का compounds are covalent. Next reasons बोलो और. अरे चार ही तो reasons है और हर बार common है. बेरिलियम सबसे Small. छोटा है तो small size. Then properties like ionization, enthalpy and electronegativity is high or low? High. बस यही रीजन है. आप कोई भी एनोमलस बिहेवियर का रीजंस निकाल के देखो, इट इज हैविंग द सिमिलर reasons. High polarizing power, small size, high ionization enthalpy, high electronegativity. इसीलिए second period element बाकी elements of the same group से sorry differ करता है. So now points क्या क्या है? Beryllium has exceptionally small atomic and ionic sizes and thus does not compare well with the other members of the group. And that is the reason beryllium is considered to be a non-alkaline earth metal. Alkaline earth metals except beryllium. इस तरह के स्टेटमेंट्स बोलते हैं ना, तो बेरिलियम को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कंसिडर करते हैं बिकॉज ऑफ वेरी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज. उस केस में लिथियम को भी नहीं कंसिडर करना चाहिए. बट बेरिलियम का एक सबसे डिस्टिंक्ट बिहेवियर है कि इट इज एम्फोटेरिक एंड बाकी सारे ऑक्साइड्स पूरे एस ब्लॉक में बेसिक है. इस एकदम यूनिक और डिस्टिंक्ट बिहेवियर की वजह से बेरिलियम इज नॉट कंसिडर्ड एज द अल्कलाइन अर्थ मेटल. Then, because of high ionization enthalpy and small size, it forms compounds which are largely covalent. Now, if we have got the concepts well, these all points are simple to understand. इनको याद भी नहीं रखना है, ये तो आप gradually जैसे जैसे आप theory part करोगे, they all will be remembered with concept. So largely covalent होने की वजह से easily hydrolyzed, ये भी हमने किया ना. बेरिलियम का कंपाउंड BeCl2 को हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको मिलेगा बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और HCl, जिसकी वजह से सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. Then beryllium does not exhibit a coordination number more than 4, as in the valence shell there are only 4 orbitals, and that's the concept of maximum covalence, which is always equal to 4 for any second period element. अब जब मैं बोलता एनी सेकेंड पीरियड, मतलब मैंने सेकेंड पीरियड के लिए जनरल स्टेटमेंट बोला है. और बाकी मेंबर्स जो है दे कैन हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर व्हिच इज आल्सो द कोवेलेंस.
covalence of 6 by making use of d orbitals. The oxide and hydroxide of beryllium, unlike the hydroxides of the other elements in the group, are amphoteric. Beryllium का oxide and alumina both are amphoteric, and amphoteric nature से diagonal relation relate होता है. Here we are with the diagonal relation. So like aluminium, beryllium is not readily attacked by acids because of the presence of an oxide film on the surface of the metal. ये well known है कि alumina is not attacked by the moisture or acid or alkalis because of the protective layer. And same goes for beryllium का oxide, BO. Then beryllium ka hydroxide dissolves in excess of alkali to give a berylate ion. We have already seen the reaction, BOH4 negative 2, right? Just as aluminium hydroxide giving the aluminate ion of the formula AlOH4 negative. The chlorides of both beryllium and aluminium have a chloro-bridge structure. ये भी मैंने previous concept में बताया. And the chloro-bridge structure is in the vapor phase. Both the chlorides are soluble in organic solvents and are strong Lewis acids. Remember, जब कोई कंपाउंड कोवेलेंट होता है तो वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं करता है. They have a tendency to dissolve in organic solvents. LiCl is soluble in ethanol, not water. BeCl2, AlCl3, they all will be soluble in ethanol, pyridine, acetone, the organic solvents. Correct? Yes, sir. And also they are strong Lewis acids, and this property is used in the organic very important reaction called Friedel-Crafts reaction. याद है Friedel-Crafts? Yes, sir. So what does benzene get converted to in Friedel-Crafts alkylation? Toluene. Very good. And acylation? Acetophenone. Perfect. Good. Then beryllium and aluminium have strong tendency to form a complex BF42 negative and AlF63 negative. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने जैसी है. बेरिलियम जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है? 4. 4 दिख रहा है, और वो उसका मैक्स है ना. लेकिन Yes, sir. अल्यूमिनियम थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो देखो कितना बना रहा है. 6 बॉन्ड्स बना सकता है. अब वेकेंट डी ऑर्बिटल्स यूटिलाइज किया है. Then we have the important compounds of calcium. So the first one is calcium oxide or quicklime. Important compounds में तीन चीजें हैं: preparation method, the chemical reactions and the uses. तो सबसे पहले preparation method should be well known. The quicklime is prepared on a large scale by thermal decomposition of limestone, CaCO3. So when it is heated, it forms quicklime and releases carbon dioxide. Now, if this reaction is carried out in a closed vessel, what can happen? Reversible. It will become reversible. तो अगर मुझे इसको irreversible बनाना है तो it needs to be heated in an Open Open vessel. container. open vessel, because उस केस में the CO2 could escape out and the reaction can go to completion. This was the initial part of the equilibrium where we discussed about this concept, right? And the decomposition should be carried out at 1070 to 1270 Kelvin range. So that's preparation of quicklime. Ab reactions. The quicklime is a basic oxide. So when the oxide of a metal is dissolved in water, it has a tendency to form Hydroxide. so it will form CaOH twice. Then calcium oxide is a metal oxide which is basic in nature. So because of that, it can have a tendency to react with Acid. Acids. acids or acidic oxides. So acidic oxides like P4O10
and it would form a corresponding Salt. salt. Can you name the salt and give the formula? Calcium phosphate. Correct. Because the salt which is formed should be in the Same oxidation state of very good phosphorus. सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस. इसका तो प्रॉब्लम नहीं है ना, बिकॉज इसका तो वैलेंस फिक्स्ड है, बट फॉस्फोरस का वेरिएबल है, इसलिए इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस याद रखना बहुत ज़रूरी है. So now we have Ca+2 and phosphate PO4 3 minus. The formula is Ca3 PO4 twice. Now likewise you can think about many of the other reactions which are similar. जैसे calcium oxide can combine with CO2 to form calcium CaCO3. carbonate. CO can combine with SO2 to form Calcium CaSO3. sulfide. very good calcium sulfite and not sulfate. SO3 होगा तो सल्फेट बनता. फिर the oxide can react with the Silicate. silicate, and the formula of silicate is CaSiO3, calcium silicate. And this is one reaction which is used in metallurgical reactions. See, metallurgical reactions में जब किसी ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो देर आर लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज, अर्धी इम्प्योरिटीज. एंड व्हाट आर दोज इम्प्योरिटीज कॉल्ड? Gangue. Gang. Now to remove those impurities we use some material which is called as the flux. तो फ्लक्स वो सब्सटेंस होता है जो गैंग या इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट करके एक इनसल्यूबल मटेरियल बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्लैग. Now this will discuss in metallurgy again, but just ये रिएक्शन आया था तो मैंने बताया कि सिलिका जो अर्धी इम्प्योरिटीज है उसको गैंग बोलते हैं, which can combine with the flux and it can form a slag. The silicates behave as a slag. तो बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है फ्लक्स की तरह काम करते हैं when it comes to the extraction of the metals. Fine. Yes, sir. Next, calcium hydroxide, also called slaked lime CaOH twice, and the hydroxide is prepared by adding water to quicklime. अभी हमने reaction देखा, quicklime को पानी में डालो, it will form the hydroxide and that is slaked lime. It is a white amorphous powder sparingly soluble in water. The aqueous solution is known as lime water and a suspension of slaked lime in water is known as milk of lime. The aqueous solution is known as lime water and a suspension of slaked lime in water is known as milk of lime. तो बेसिकली ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है. स्लेक्ड लाइम बोलो, लाइम वाटर बोलो, मिल्क ऑफ लाइम बोलो, they're all related to the calcium hydroxide. Next, when carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to formation of insoluble calcium carbonate. तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है कि जब CaOH ट्वाइस लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो इनसल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा प्लस H2O and the lime water is said to turn milky and the milky appearance is due to the formation of insoluble calcium carbonate. Then, on passing excess of carbon dioxide, the precipitate dissolves to form the bicarbonate. मतलब कार्बोनेट्स को डिसॉल्व करो वाटर में एंड व्हेन वी पास विद एक्सेस CO2, सॉल्वेज प्रोसेस में पढ़ा है हमने, द कार्बोनेट्स कन्वर्ट इनटू द बाइकार्बोनेट्स. Then the milk of lime reacts with chlorine to form hypochlorite, a constituent of bleaching powder. मतलब CaOH twice when reacts with chlorine
it should be cold and dilute. Under cold condition and diluted CaOH twice, it forms calcium का chloride, calcium का hypochlorite and water. Now can you see something special in this reaction? ध्यान से देखो. Okay, the hint is with regards to redox. Do you see something special? Chlorine is having a positive and negative. So what is the name given to such redox reactions? Disproportionation. Disproportionate. Perfect. पूरा बहुत टाइम के बाद आपका आवाज आया. Happy to hear that. New additions. Keep responding. I feel happy. Okay, so when chlorine is reacted with an alkali like calcium hydroxide, it forms a chloride with Cl in -1 and a hypochlorite. हाइपोक्लोराइट का अनायन होता है OCl नेगेटिव, उसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1. So now this is a reaction where chlorine undergoes oxidation as well as reduction, and it's a disproportionation reaction. And it's written that the hypochlorite is a constituent of bleaching powder. And what is bleaching powder? Formula. Formula bleaching powder. पढ़ा है ना आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में कि नहीं? रेडॉक्स में किया भी है. CaOCl2. CaOCl2. And look at the difference. It is different from CaOCl the whole twice. This is hypochlorite of calcium and this is calcium oxychloride, which is the bleaching powder. इसीलिए वहां पर लिखा है the hypochlorite is a constituent of bleaching powder because bleaching powder में the calcium +2 is linked with Cl negative and OCl negative. Two anions are there, where the chlorine is having a +1 and a -1 oxidation state in the same molecule. समझता है ये? नहीं समझता है? नहीं समझता है? So can you just say it again? CaOCl twice and CaOCl2 फॉर्मूला डिफरेंट है. Yes, sir. CaOCl2 का मतलब है it's Ca+2 and OCl negative. मतलब it is having only one anion which is hypochlorite. And the formula of hypochlorite is CaOCl the whole twice. But bleaching powder is CaOCl2, wherein the calcium cation is linked with two anions. One is Cl negative, other is OCl negative. मतलब bleaching powder में within the same molecule chlorine has -1 and +1 oxidation state. हाइपोक्लोराइड में तो क्लोरीन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो +1 है. समझा गौतम? Okay, so got it. So calcium hypochlorite is different from bleaching powder. The difference is calcium hypochlorite is CaOCl the whole twice, ब्रैकेट twice है, और ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 है without a bracket, and that bracket makes lot of difference. It changes the entire molecule. समझा? Yes, sir. कभी कभी लगता है मैं सिर्फ गौतम को और एक दो और स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं. जय, जयदीप, श्रीवत्स, Yes, sir. आकृति, Yes, sir. मैथिली. Yes, sir. अच्छा, नाम बोलना पड़ता है क्या तुम लोग से रिस्पॉन्ड कराने के लिए? इज इट लाइक दैट?
देखो अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. Yes, Mathili, do I need to speak your name? No, sir. Next time I should hear your voice. Okay, पूरा. sir. Yes, sir. हाँ, एक्टिव हो जा. पहले तो बहुत बोलते थे, अभी शांत हो गए आप. ऑल फाइन ना? Yes, sir. ओके. अच्छा, नाउ डिफरेंस स्ट्रक्चर में तो है ही, लेकिन रिएक्शन में भी है. When chlorine is treated with CaOH twice in the dry condition, जिसको बोलते हैं dry slaked lime, मतलब there is no water which is present, then in that case it directly gives you bleaching powder and water. In cold and dilute condition, it undergoes a disproportionation, but with the dry slaked lime, chlorine forms a bleaching powder. This particular reaction we will learn in group 17 elements, but यहाँ पर discussion है तो मैंने आपको बता दिया difference के साथ. Make a note of this. कहीं ना कहीं ये सारे reactions, if they are related to the elements of group 15, 16, 17 or the P block elements, they are going to get repeated. तो यहीं पे अगर अच्छे से कर लोगे तो बहुत सारे reactions आप आगे देखोगे कि they are kind of repeated because they were already done. ठीक है, तो ग्रुप 17 के ये दो रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर कंपैरेटिवली डिफरेंस के साथ बता दिया है आपको. नेक्स्ट, calcium carbonate occurs in nature in several forms like limestone, chalk, marble, etc. It can be prepared by passing carbon dioxide through slaked lime or by addition of calcium carbonate to sodium chloride. तो इसके रिएक्शंस को अगर लिखेंगे तो सिंपल है कि कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है. CaOH ट्वाइस और CO2 कंबाइन करने पर कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर मिलेगा, या फिर इफ वी हैव द वॉशिंग सोडा Na2CO3 एडेड टू कैल्शियम का क्लोराइड, इट फॉर्म्स एन इनसोल्यूबल कार्बोनेट कैल्शियम का एंड NaCl. दैट्स इट. ये हो गया प्रिपरेशन मेथड. प्रॉपर्टीज में कैल्शियम कार्बोनेट इज अ वाइट फ्लफी पाउडर ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन वाटर. बहुत बार बोल चुके हैं ये तो. insoluble in water, and when heated to 1200 Kelvin, we know there was a reversible reaction possible. So on heating, it decomposes to give the quick lime and carbon dioxide. Then the calcium carbonate can react with the acids, and the carbonates ka CO2 can be liberated, can be made to liberate when it reacts with the dilute acids. तो HCl के साथ वो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 को लिबरेट करेगा. Basically here the calcium carbonate is acting as a, what is the behavior of CaCO3? बोलो. Base. It's simply a carbonate base reacting with the acid to give the salt, water, and क्योंकि carbonate base है वो CO2 को भी liberate कर रहा है. And because of this basic character, it can be used as a mild antacid also. ठीक है, एक कॉमन एंटासिड जो यूज होता है दैट इज सस्पेंशन ऑफ MgOH ट्वाइस इन वाटर, जिसको कमर्शियली बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. लिया है कि नहीं कभी? Milk of magnesia is a common antacid which is simply magnesium hydroxide ka suspension in water, and it's used as a good antacid because it's a base and neutralizes the acid. Similarly, the carbonate reacts with the sulfuric acid to form sulfate as a salt and water and liberates the carbon dioxide gas. So these are the reactions which are quite easy. Just go through them.
many of the reactions are direct and straightforward. कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान दो. Then we have calcium sulfate or plaster of Paris, which is hemihydrate of calcium sulfate. And this particular hemihydrate is prepared from a mineral called gypsum. And gypsum is CaSO4 dot twice H2O. Gypsum is a calcium sulfate mineral with 2 molecules of water of crystallization. When the gypsum is heated to a temperature of 393 Kelvin, remember the temperature, it loses 1.5 3/2 molecules of water of crystallization and forms a hemihydrate CaSO4 dot half H2O. And this hemihydrate is called plaster of Paris, which is largely used in the false ceiling. Also, in the when you have fractures, it can be used to immobilize the organ where the fracture is there. It is used in dentistry, ornaments, and many other items. Okay, but the temperature here should be maintained at 393 Kelvin, almost 120 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर इसको ऊपर हीट करते हैं above 393 Kelvin, then this hemihydrate का H2O also gets lost and we get anhydrous calcium sulfate, which becomes useless, and it can't be used in the form of the plaster. So ये जो anhydrous form of calcium sulfate है, because of its property, it is named as dead burnt plaster. So that's why gypsum के through POP बनाने के लिए temperature maintained should be 393 Kelvin. And POP में एक बहुत important property है कि when added with water, it immediately has a property to get hardened. Gets hardened. Within 15 to 20 minutes, it gets hardened. Okay. Now coming to the last part of important compound, cement. Now, if you see that in this part, there are a lot of theoretical points which are given. I'll just try to convert all the points into a simple trick that you can remember all the points in a short manner. And this is one way where you can prepare your own notes in this manner. Look at this. First of all, जो cement है, that was obtained from natural limestone, which was quarried in the isle of Portland. मतलब इसका जो resemblance है और ये जो पहले बनाया गया था, it was in the Portland, England. That is why जो commercial cement है, that is named as Portland cement. Next, ये जो cement होता है, that is rich in many of the oxides, and it is rich in the oxides of silica, which is in the form of clay, lime, that is CaO, calcium oxide, and the oxides of aluminium, iron, and magnesium. So the composition of cement could be remembered as oxides of clay. Clay matlab clay silica, lime CaO, alumina Al, iron FeO, and magnesium MgO. खत्म. उसके बाद अच्छा क्वालिटी सीमेंट बनाने के लिए there are some conditions which are to be satisfied. The first condition is the ratio of silica to alumina. The ratio of silica to alumina should be between 2.5 to 4. मतलब जो composition में सिलिका और अलुमिना लिया जाता है वो 2.5 to 4 के बीच में होना चाहिए. And lime के केस में the other ratio to be maintained is lime with respect to other oxides should be as close as possible, and it should be approximately equal to 2. That's the parameter or the condition for a good quality cement. उसके बाद उसके reactions की बात करते हैं. So here when
the main ingredients or the raw materials, that is silica and lime, are mixed together, they both react together and fuse to give a mixture named as cement clinker. Cement clinker. The cement clinker is a fusion of silica and CaO. Silica and CaO. Okay. Now this cement clinker is further added with 2 to 3% of gypsum, CaSO4.2H2O. Now इसको यूज किया जाता है with a reason. यहाँ पर सीमेंट क्लिंकर जो है, it has a property to get hydrated very fast. तो अगर बहुत फास्ट हाइड्रेशन होगा तो द हार्डनेस ऑफ द सीमेंट वुड नॉट बी दैट इफेक्टिव. इसीलिए टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, to slow down the process of setting of cement, the gypsum is used. Process of setting. ठीक है. अब gypsum यूज करने के बाद फाइनली वी obtain the cement, और इस सीमेंट में अब आपके तीन मेन इंग्रेडिएंट्स या रॉ मटेरियल्स हो जाते हैं. The ingredients are dicalcium silicate Ca2SiO4, tricalcium silicate Ca3SiO5, एक एक कैल्शियम और ऑक्सीजन बढ़ा दो, and tricalcium aluminate Ca3Al2O6. These are the three ingredients of the cement when the gypsum is added to cement clinker. दूसरी बात, ये cement clinker water के साथ हाइड्रेशन अंडरगो करता है, एंड इसी हाइड्रेशन के प्रोसेस की वजह से द हार्डनेस ऑफ द सीमेंट इज पॉसिबल. क्लियर? Now you can just read the statements which are given on page 44. Cement is an important building material first introduced in England in 1824 by Joseph Espdin. It is also called Portland cement because it resembles with the natural limestone chloride in the Isle of Portland, England. It's a product obtained by combining a material rich in lime, clay, oxides of aluminum, iron, magnesium. ये point 2. Point 3 में इनके composition में lime is the maximum percentage which is present. So CaO is an important raw material in the production of cement. ये use हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का. उसके बाद उसी पॉइंट में आप देखोगे गुड क्वालिटी सीमेंट के लिए सिलिका टू अलुमिना 2.5 to 4 होना चाहिए, और लाइम विद अदर्स शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू 2. उसके बाद व्हेन द फ्यूजन ऑफ क्ले एंड लाइम इज डन इट फॉर्म्स अ सीमेंट क्लिंकर added with 2 to 3% of gypsum, it forms cement. Hence the important ingredients are dicalcium silicate, tricalcium silicate and tricalcium aluminate. उसके बाद when mixed with water hydration होता है, and gypsum का purpose है to slow down the process of setting. All the points are covered. Clear? Yes, sir. So this is how you can actually make a mind map of the properties which we have discussed. इससे आपको डायरेक्ट सारे पॉइंट्स जो है उसका ओवरव्यू पिक्चर फॉर्म में आ जाएगा, एंड दिस इज द मैनर इन विच द थिंग्स कैन बी रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम. अच्छे से याद रहेगा. And finally, we have the biological importance of calcium and magnesium. So an adult body contains about 25 gram of magnesium and 1200 gram of calcium compared with just about 5 gram iron and 0.06 gram of copper. Daily requirement in the human body has been estimated to be around 200 to 300 milligram, which can be obtained from the normal diet. Then all enzymes that utilize ATP in phosphate transfer requires magnesium as the cofactor. तो अपने बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं जब उनका ब्रेक डाउन होता है तो इट ब्रेक्स टू गिव टू सॉरी so it breaks down to give two components. One is proteinic part and the other is non proteinic part. तो जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोफैक्टर, नॉन प्रोटीनिक पार्ट. ठीक है, ये भी हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द प्रोटीन्स.
Then the main pigment for the absorption of light in plants is chlorophyll, which contains magnesium. Chlorophyll contains magnesium. About 99% of body calcium is present in bones and teeth, also plays important roles in various functions. Calcium concentration in plasma is regulated at about 100 milligram per liter and maintained by two hormones, calcitonin and parathyroid hormone. So that completes the biological importance and the chapter S block elements. Clear? Yes, sir. Okay, so next time there will be the Google form test of alkaline earth metals part of the chapter from 10.6 till the end, till the biological importance. Okay, and next time I'll start with the P block elements. So I'm going in continuation with the entire inorganic chemistry. तो एक flow में जब करेंगे तो whatever things we have not understood in some of the parts of the chapter, they will be correlated in the later parts. P block में आएगा, coordination में आएगा. We have studied about various complexes in between. So all those things will be understood when we move to the other parts of the inorganic chemistry.